anyone, whoever wants to examine, may come to the table over here and examine if they desire. So if we can proceed candidate wise karenge. Okay, we'll start. Good morning, ma'am. Yes. In fact, ma'am, I'm advocate for every candidate who is a residue. And we have, before you reach here in the chamber, we have already had a discussion. All the parties are represented either by the election agent or by the council. So we have made a discussion and arrived at the decision that we will not be examining any of the nomination, and we just leave it to you as RO and let accept all this nomination. Okay. If any one of my friends have any objection, of course we have already discussed that earlier. If they have any objection, they may raise. Otherwise, So from candidate Shri Kiran Rijiju, he's saying that you don't need any examination. If everybody is in consensus, then yes, I am from Bimpak Siga. I am representing. Since preliminary scrutiny has been done by from your side, and we have been already served the checklist on the okay. So I think my other colleagues will also not cross-check it again why we should go for this lengthy process. So from our side also, we don't want to check or cross-check others' nomination. Since it's found already okay by RO. No, scrutiny is the time you have the opportunity to Yes. raise if Yes. you think there is something Yes, wrong. yes. Because at the end of every day, whenever nominations are filed, Yes. there is an online portal wherein we have been uploading everybody's affidavits, Yes. everybody's supporting documents. So that was your due diligence to check Yes. before you came for scrutiny today. Yes. Now, if you've done that and you're satisfied and gone through everybody's affidavit, and you think that you don't have any submission or any objections to make, that's okay. You will not use the basis that I have done of the scrutiny at my time. I've done it so that I can make sure that I am presenting to you the correct facts today. Yeah. You will decide whether you don't want to examine or examine each of the papers based on you having done a scrutiny based on what is uploaded online. We believe they all have also filed it in Kota format and all. आप लोग फिर देखा होगा सबका ऑनलाइन जो अपलोड हुआ है और मस्ट हैव इट्स इन माय नोटिस बोर्ड आल्सो इट्स इन एवरी नोटिस बोर्ड व्हिचएवर इज अवेलेबल तो आप लोग की एक कैंडिडेट का हां एक-एक करके आप लोग बता दीजिए श्री किरण रिजिजू और विभाग से from Bimpak side. and ma'am, whatever we shall be stating, it should be on the instruction of the candidate. As I have already said earlier, I have the instruction from the candidate that we will not be examining the nomination paper of other candidate. आप लोग भी अपना ओपिनियन दीजिए. From INC side, I do agree with the proposal placed by my two colleagues. From Nabung Tuki side, I do agree with the proposal placed by the two council. I have no objection to it. Anybody. Yeah, if you can explicitly tell me you have no objection, Yes. then that is easier for me Yes, to I have no record the objection. proceedings of today. And ma'am, I'm an advocate for Rohit Abu, and we are also satisfied. We are satisfied, and we have no any objection. Sir is the general observer, as I had already mentioned in my introduction. She might, Naveen Mahajan sir is 1997 batch IS officer. So I'd like to extend a warm welcome to sir also. Sir has arrived at Alo yesterday and today he is here with us to witness the scrutiny process of 1 West Arunachal Parliamentary Constituency. So just quickly introducing sir, we are in the process of scrutinizing. All the representatives of all the 8 candidates, 7 candidates are here sir. 1 candidate's representative hasn't come. And that's what is important in the board proceeding. It's all under videography also. And sir, I've given them the opportunity if they want to examine each of the file or each of the nominations. So so they all one by one saying they don't have any objection. They don't want to scrutinize in details. So I'm just recording that. And if you don't have an objection, No, no, sir. then think everybody is eligible.
Yes, sir. So right now some दिया है जो recognized national या state parties है और जो registered unrecognized state parties भी है उनका तो as per concessions in the election symbol का rules para 10 में जिस का concessions for symbols मिल गया उसको तो वही symbol मिलेगा. बट फॉर इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स आप लोग तीन प्रेफरेंसेस दिया है उसमें सिंबल एलोकेशन के लिए आप लोग अपना प्रेजेंस रखिए सो दैट आप लोग भी विटनेस कीजिए कि हम लोग सिंबल कैसे अलॉट कर रहे हैं वो मतलब फेयरनेस में इट शुड बी फेयर जैसे सिंबल अलॉट हम लोग कर रहे हैं ओके तो आई रिक्वेस्ट ऑल द कैंडिडेट्स ऑल द रिप्रेजेंटेटिव्स टू विटनेस सिंबल एलोकेशन आफ्टर विड्रॉल 30 मार्च के इमीडिएट 3 बजे के बाद ही हम लोग सिंबल एलोकेशन चालू करेंगे आफ्टर 3 आप लोग अगर नहीं आ रहा है कोई विड्रॉ नहीं कर रहा है तो हम अपना प्रिलिमिनरी अपना लेवल पे करते रहेगा एट 3 आई विल शो यू व्हाट हैज बीन एलोकेटेड एंड आई विल शो यू हाउ इट हैज बीन एलोकेटेड आल्सो ओके so that was the last thing I had to say जाने से पहले I just would request कि आप लोग तो already indicate कर दिया कि कोई withdraw करने वाला तो नहीं है but anyway we still have another day 30th March तक हम लोग का है till we have the final list of contesting candidates लेकिन just taking the opportunity अभी तो आप लोग का थोड़ा activities भी चालू हो गया but my appeal and my request would be that let's keep it a little peaceful at least district में और entire constituency में भी cooperative spirit में जैसे आप अभी amongst yourselves only I think you are right at a consensus कि कोई किसी को वो नहीं करेगा counter objection या whatever so with that spirit only let's work cooperatively let's work fairly और पूरा election process को smoothly करेंगे आप लोग अपना campaigning वगैरह करिए but just keep in mind कि law and order and peace should also prevail and no public no citizens and no individual should be harmed in the process or nobody should be disturbed in the process or obstructed from their normal personal lives so ये याद रखते हुए I just wish all of you all the best also and we can close the scrutiny proceedings. So last thing उसके बाद और नहीं बोलूंगी मैं 31st को आफ्टर 30th को आपका फाइनल लिस्ट ऑफ कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स निकलेगा 31st को वी विल हैव अ मीटिंग एट आरओ लेवल एट माय लेवल ऑफ ऑल द कंटेस्टिंग कैंडिडेट्स ओके तो उसमें आप लोग जरूर रखिए आपका तो अभी सो फार वी हैव बीन ओनली हैविंग मीटिंग्स विद पॉलिटिकल पार्टीज स्पेशली इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स का तो वी डोंट नो आल्सो क्योंकि आप लोग यू नॉट फील्डेड बाय अ पार्टी ना तो आप लोग के साथ ज्यादा इंटरेक्शन हुआ ही नहीं बट इमीडिएटली आफ्टर द 7A फॉर्म 7A व्हिच इज द लिस्ट ऑफ द final list of contesting candidates these candidates who come in that form 7A या अपना advocate या election agent to hear what are some of the do's and don'ts, some of the instructions during election process, especially आपके campaign related हो या आपका anything counting related या poll day related, some kind of training come orientation. तो आप लोग please make sure that you are come for that, okay? और last thing again is that और एक order है Section 127A of Representation of People Act prescribes that you have to take permission for any public proceeding, of political meeting, rally, procession, political जो nature का होता है, before the district magistrate, by the DEO, which is me again. तो my request is that ये order copy भी आप लोग को अभी circulate कर देगा. I passed an order under section 127A of RP Act and it is my duty also to circulate the abstract of this section. आपको मिल गया ना? Okay, very good. तो इसको आप मिल गया तो फिर आप लोग अप्लाई भी कीजिए. Okay. Any permission should be sought 48 hours prior. आप लोग 5 मिनट आके अगर बोलता है कि हम लोग 5 मिनट में एक पार्टी मीटिंग रखा है या प्रोसेशन रखा है, we didn't know कि you know आपका ऐसा ऑर्डर है, that is now it's beyond my scope. Now it's all your responsibility. Okay, I'll not be able to issue permission 5 मिनट पहले. Okay, so with that I think this would be my last point. और तो कुछ है नहीं. So with that I'll close today's proceeding. Thank you. Form 8 election agent appointment ना some has not done तो जिसने भी नहीं किया election agent का appointment application भी आप लोग डाल दीजिए in duplicate
ताकि जो सेकंड कॉपी है उसमें मैम का सिग्नेचर स्टार्ट करके हम लोग वापस देंगे, वो इलेक्शन एजेंट लेके ये उसका आईडी कार्ड बनेगा वो है। और प्लस अकाउंटिंग का भी, अकाउंटिंग के लिए आप लोग का अगर जो इलेक्शन एजेंट आपने अपॉइंट किया, इफ ही और सी इज कॉम्पिटेंट इनफ, ठीक है, अदरवाइज यू कैन अपॉइंट वन एडिशनल एजेंट ऑल्सो फॉर अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इंपॉर्टेंट है। एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर हमारा सर्किट हाउस में बैठा हुआ है, अकाउंटिंग टीम भी वहीं पे है। पीसी के अकाउंटिंग टीम से आपका जो इलेक्शन एजेंट अकाउंट्स देखेगा वो उनके साथ कॉन्टैक्ट में रहना, सप्ताह में उसका अपडेट होगा। आप लोगों का 4 रजिस्टर दिया होगा, फॉर्मेट दिया है, वो अकाउंटिंग रजिस्टर्स अप टू डेट करना है। वहाँ पे लोग शैडो ऑब्जर्वेशन रजिस्टर मेंटेन करेगा। आप लोग जो खर्चा करेगा उसका वोचर्स वगैरह देगा, उसको फोल्डर ऑफ बिजनेस बना के लोग रखेगा अपने पास, उसको टैली करता रहेगा टाइम टू टाइम। टैली नहीं करने से क्या होगा, ऐसे लॉन्ग पीरियड के बाद में आएगा तो अकाउंट मिलाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए बीच में आप लोग का वो इलेक्शन एजेंट यहाँ पे आना पड़ेगा अकाउंटिंग के लिए, उसमें वो आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा ना। 31 का मीटिंग में इसलिए थोड़ा आना जरूरी है, खास करके इलेक्शन एजेंट जो अकाउंट मेंटेन करेगा, और कैंडिडेट पे हो सके तो आने से अच्छा है। 31 वाला मीटिंग में हम लोग और भी डिटेल में आपको बता देंगे ये सब भी ना, अकाउंट, डेली अकाउंट मेंटेनेंस एंड ऑल ऑफ दैट। लेकिन ये रजिस्टर आप लोग को ऑलरेडी दिया गया है, आई थिंक ड्यूरिंग नॉमिनेशन। आई होप एवरीबॉडी हैज गॉट दैट एक्सपेंडिचर रजिस्टर ना। इसमें आपका डेली एक्सपेंडिचर होगा स्टार्टिंग फ्रॉम द टाइम यू हैव गिवन योर नॉमिनेशन, विच मीन्स अभी आप कुछ कर रहा होगा, लेकिन आप वो सब आपको ये डे टू डे एक्सपेंडिचर वाला रजिस्टर में रजिस्टर करना ही है। ओके, और जैसे एडीसी साहब ने बोला है, whenever the expenditure observer, अभी तो सर इज जनरल ऑब्जर्वर, सर ओवरऑल देखेंगे, एक एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर अलग से है। ही विल ओनली सुपरवाइज एंड मॉनिटर एक्सपेंडिचर ऑफ ईच कैंडिडेट। तो ही विल कॉल फॉर योर रजिस्टर्स, डेली रजिस्टर को स्क्रूटनाइज भी करेगा whenever he wants, और certain days are also there when he scrutinize ना। तो 31 में आपको सब डिटेल में बता देगा। हमारा डिस्ट्रिक्ट लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी है, ट्रेनर्स को भी बुलाएंगे अलग अलग टॉपिक्स में। जैसे एमसीसी वायलेशन का एक मास्टर ट्रेनर होगा हमारा, ही विल गिव यू अ डिटेल ऑफ क्या क्या डूज एंड डोंट्स है फ्रॉम कैंडिडेट एंड पॉलिटिकल पार्टीज पॉइंट ऑफ व्यू। हमारा मास्टर ट्रेनर पोल डे के लिए अलग से है कि पोल डे में आपका क्या क्या है। पोल डे में तो आपका बहुत रोल है, लाइक यू हैव टू अपॉइंट योर पोलिंग एजेंट एंड डूज एंड पीएलएस आपको अपॉइंट करना है, वो सब आपका मास्टर ट्रेनर पोल डे वाला समझा देगा। सिमुलेशंस वगैरह, व्हीकल का, ऑल ऑफ दैट, everything, expenditure related, expenditure monitoring भी हमारा बहुत strictly हो रहा है। So all of that will be explained by the concerned master trainers. EVM related भी, if you want we can do an EVM demonstration also आप लोगों को सिखाने के लिए कि क्या है। और in fact 31st को जब हम लोग का मीटिंग हो रहा है, we will be having our second EVM randomization also. Second EVM randomization में क्या, first वाला हमारा तो वो हमने कर लिया। It's a software randomization of all the EVMs. EVM का क्या होता है? There are 106 polling stations at least in West Siang district. Each of the polling station gets one set of EVM VVPAT. वो तो आपको पता ही है। तो that means we have 106 EVM VVPAT set plus थोड़ा सा रिजर्व हमने रखा है। All of these EVM VVPAT has unique ID. Each of the machine. EVM consists of the ballot unit and the control unit. And there is a VVPAT. VVPAT में आपका जो पेपर स्लिप निकलता है, तो each of these units, BU से लेके CU से लेके VVPAT has a unique identity number, UIN. Each of these UIN number, which is allocated to West Siang, which is 106 into 3, मतलब 3 यूनिट हो गया ना BU CU. All of this is fed into our software. हमारा एक EVM मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर करके होता है, उसमें हम रैंडमाइज करेगा। सो इट्स अ सॉफ्टवेयर बेस्ड रैंडमाइजेशन, नो ह्यूमन इंटरवेंशन इज देयर। उसमें आई रिक्वेस्ट कैंडिडेट्स या उनके एजेंट्स टू बी प्रेजेंट सो दैट यू सी की रैंडमाइजेशन ऑफ द ईवीएम, जो ईवीएम अलॉट होगा पोलिंग स्टेशन में हो या असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इज डन इन अ फेयर मैनर विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन फ्रॉम आवर लेवल या एनीबडी एल्स। ये सॉफ्टवेयर में ही रैंडमाइज होता है। एंड दिस एंटायर रैंडमाइजेशन प्रोसेस जो हम लोग ऐसे ही कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठ के करेंगे will be done under videography. All of this is going in our evidence also. Okay, so all fairness is being maintained. ECI has ensured that सब कुछ fair में ही होगा and we are trying to involve you. तो जब हम लोग आपको invite करता है ना, आप लोग आइए, देखिए, participate कीजिए, आप लोग please ensure कि आपका कोई representative आता है, क्योंकि बाद में फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये EVM तो यहाँ का नहीं था, how did we not get informed. आप in fact आपको list दे देगा of all the unique IDs.
after the second randomization. Okay, तो while we are doing this 31st को 31st को हम लोग का जो ये training कम orientation होगा with all the candidates ना, वही दिन को हम second randomization भी करेंगे. Planned it like that so that एक one after another हो जाता है. तो with that I think आज के लिए close कर देंगे, नहीं तो बहुत कुछ बोलने का है. सभी ने अटेंडेंस साइन किया होगा, काइंडली अटेंडेंस साइन करके ले. अटेंडेंस आप लोग जरूर कीजिए. आप सुबह एक बार सबका पैन शॉट ले लीजिए.